are the components? तो microphones जो थे, there is a microphone which is placed inside the bridge, outside the bridge also, that is bridge wings, so that the data can be collected from all the places. We have seen the 6 modules. Just now you read through the 6 modules. Then the next topic that we'll be dealing with is what are the data recorded by the VDR. Remember, all navigational parameters, critical navigational parameters, but basically everything. Why? Because everything plays a role in a given situation. What was the wind speed? That is also recorded because that may have pushed the vessel to one side. What was the depth? Kam zyada. That's the reason why it ran aground. उस समय आप क्या एक्शन ले रहे थे? रडार किस तरफ था? रडार पे क्या कर रहा था? What is the AIS? What is being somebody transmitting on the VHF? What is your intention? You are running like this, etc., etc. Everything is related data basically. So every data is recorded. We'll see all those. See that it is saying various forces the ship is subjected to. That means that includes wind, speed, direction, etc. Next, the audio module. कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा. If something is not understood, please ask me. That's applicable for everybody. ऑडियो मॉड्यूल जैसे आप लोग जानते होंगे, सब कंप्यूटर सावी बच्चे हैं आप लोग, तो ग्राफिक कार्ड आती है, यूएसबी कार्ड आता है, अडाप्टर्स आते हैं, मदरबोर्ड में वो तरह की चीजें लगती है ना, वैसे ही ऑडियो मॉड्यूल मदरबोर्ड में फॉर एग्जांपल उसमें ग्राफिक के लिए होता है, एक में पावर सप्लाई पार्ट होता है, बहुत तरह की चीजें होती हैं. सो ऑडियो मॉड्यूल इज बेसिकली responsible for collecting data from the microphones and audio mixing के लिए सर्किट होती है, उसके बाद वो फाइनल रिकॉर्डिंग मीडिया में सेव होता है. The important thing to note here about audio module कि इसमें अलग अलग चैनल्स होते हैं रिकॉर्डिंग के लिए. What is the meaning of channel? Can somebody describe the difference between stereo and mono? स्टीरियो और मोनो के बीच का डिफरेंस कोई बता सकते हैं? Stereo is. हाँ, go ahead. Go ahead. Sir, stereo is basically where we have a minimum of 2 channels, sir, where we can differentiate in between the left and the right audio. And sir, mono audio doesn't only consists of single channel, sir. So this is what I mean. Good. So you are referring to channel already. So you know what is a channel. अगर एक ही चैनल होगा तो सारी खिचड़ी एक बार में आएगी, मैं सेपरेट नहीं कर सकता. अगर मोनो ऑडियो है तो मैं अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग नहीं कर सकता, अलग साउंड्स को सेपरेट नहीं कर सकता. स्टीरियो में 2 टुकड़े में कर सकता हूं ना? यस सर. ओके, तो ऐसे ही चैनल्स होते हैं ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी. ब्रिज में 2 चैनल कम से कम होना चाहिए ब्रिज की रिकॉर्डिंग के लिए. ब्रिज में एक स्टारबोर्ड साइड में जो माइक्रोफोन्स है उसका कलेक्शन अलग, स्टारबोर्ड साइड में है उसका अलग. तो मैं चाहूं तो स्टारबोर्ड वाली आवाज सुन सकता हूं एक चैनल पे, स्टारबोर्ड वाले को बंद कर दूं, या मैं चाहूं तो स्टारबोर्ड वाले को सुन सकता हूं, पोर्ट वाले को बंद कर दूं. तो ब्रिज ऑडियो शुड बी रिकॉर्डेड ऑन एटलीस्ट 2 चैनल्स so that I can choose and play the recording which I want. पोर्ट साइड, स्टारबोर्ड साइड जो भी. नॉर्मली तो ऐसे ही होगा, पोर्ट स्टारबोर्ड में ही डिफरेंशिएट होगा. इसके अलावा ब्रिजविंग की ऑडियो जो है दैट शुड बी ऑन येट अनदर चैनल. ब्रिजविंग की आवाज अलग हो.
मैं सिर्फ ब्रिज विंग की आवाज सुनना चाहता हूं, what master and pilot were speaking or what command was given by the master from the bridge. I just want to hear that voice. So I can shut down all audio and I can only listen to the bridge audio. अगर खिचड़ी हो रही है सारी चीजें, तो हो सकता है मास्टर इज स्पीकिंग समथिंग, एट द सेम टाइम somebody inside the bridge also speaking. अब कंफ्यूजन होगा ना, उसकी आवाज समझ में आ रही है ना, इधर की आवाज आ रही है समझ में. So to avoid any kind of confusion, there has to be two channels in the bridge audio, one separate channel for bridge wing audio and one separate channel for VHF audio. So minimum of 4 audio channels should be there. So one Clear, question, sir. go ahead. So we have two bridge wings. So each one channel for each bridge wing or one channel for the two bridge wings? Good question. One channel for both. क्योंकि पायलट और मास्टर खड़े होंगे एक बार में एक ही जगह होंगे ना. Yes sir, understood sir. तो उधर का हो, जिधर खड़े हो उधर के रिकॉर्ड हो जाए तो एक ही चैनल होगी, ऐसा तो नहीं होगा दो मास्टर होंगे, दोनों दो ब्रिज विंग पे खड़े होके अलग अलग बात करेंगे. सही है ना. सो वन चैनल फॉर बोथ द ब्रिज विंग्स, उसमें काम हो जाता है. लेकिन जब ब्रिज में खड़े हो मास्टर, तो ब्रिज के भीतर कोई तो हो सकता है, दो लोग एक साथ बात करते मिल सकते, लेकिन इट इज वेरी इम्प्रॉबेबल कि दो लोग अलग अलग विंग पे एक साथ हों और एक साथ बोल रहे हैं जिसमें कंफ्यूजन हो जाए. राइट. नेक्स्ट, फाइनल रिकॉर्डिंग मीडियम. ठीक है. So this is a tamper-proof type of system. This final recording medium is the black box of the VDR or of the ship. It is all that data recorded in this device itself, जिसको हमें बाद में retrieve करना होता है और उसमें से data replay कर सकते हैं. But this is not in black color. Black box is normally not in black color. It's my understanding, black, it is called black box because it absorbs all information. कोई चीज लाल क्यों दिखती है? अगर आपने मान लो योगा मैट मेरे सामने पड़ा हुआ है, लाल रंग का दिख रहा है. Why is it looking red? Why is it looking because red? it reflects red color. Yes, मतलब वो लाल छोड़ के बाकी सब कलर का है. It is reflecting red color, so I am calling it red. But वो red तो फेंक दे रहा है सब. So a black color looks black. Why? I am looking at my shoes, black shoes. Why is it looking black? Because it is not reflecting anything. Correct? Yes, sir. It's absorbing all the colors. It is absorbing all the colors. That is why it is looking black. So, do we have an analogy why black box is called black box? Because it absorbs all information. कुछ छोड़ता नहीं है, जो आती है उसके पास सब अपने आप में सोख लेता है. So, already discussed, तीन टाइप के FRM होते हैं, float free, fixed type and long term recording medium. We also talked about कि float free में एक EPUB की यूनिट होती है जिससे उसको लोकेट किया जा सके.
फिक्स टाइप में भी एक अंडर वाटर लोकेटर होता है, रेडियो सिग्नल्स आती है वहां से, जिससे शिप को भी लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे डूबी है, इस पोजीशन में डूबी है। नेक्स्ट, the three types that we talked about. FRM is for final recording medium. सर ये लॉन्ग टर्म एफआरएम मीनिंग क्या है? फिक्स Long टाइप तो term- जैसे हमारा मंकी आइलैंड पे लगा हुआ है, फ्लोट फ्री इज आल्सो देयर, बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ लॉन्ग टर्म एफआरएम? All right, so why it is saying that, because इसमें 48 hours का डेटा होना चाहिए फ्लोट फ्री में, ठीक है। ओके सर। फिक्स्ड में भी it is recording is 48 hours. ओके सर। Long term is required to record data for 720 hours. 30 days का डेटा होना चाहिए। It is like normal hard disk of a computer. जिसकी Okay, डेटा मेमोरी बहुत लंबी चौड़ी होगी, 1 TB 2 TB का होगा, so much of memory so that it can record all the data. That is why it is recording data for 30 days, and that is Okay, why sir. it is called लॉन्ग टर्म जी। एफआरएम। सो सर इसका ये रिक्वायरमेंट है कुछ आईएमओ का कि 720 आवर्स का होना चाहिए डेटा रिकॉर्डिंग? तो 48 आवर्स किसने कह दिया? अगर IMO ने नहीं कहा तो नहीं सर, ये लॉन्ग टर्म वाले की बात कर रहा हूँ। मैं सबकी कह रहा हूँ। ये जो 48 आवर्स है, this 48 hours, this 48 hours, 720 hours, these are all mandate of the IMO only ना। ओके सर, गॉट। सारी चीजें तो हम IMO के रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं ना। यस सर। एक तो ये कि 3 तरह के होने चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है एज पर IMO, और Yes, उसमें 48 आवर्स, 72 आवर्स, 720 आवर्स, ये भी IMO की रिक्वायरमेंट है। ओके सर। ये भी IMO की रिक्वायरमेंट है कि जो डेटा रिकॉर्ड हो गई वो टैंपर प्रूफ नहीं होना चाहिए, छेड़खानी नहीं कर सके कोई। IMO says that also. IMO also says that once the recording is stopping, फ्लोट फ्री में रिकॉर्ड हुआ था, मान लीजिए जहाज डूब गई, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, then the data which is there for 48 hours should be available in readable condition. उसका डेटा करप्ट नहीं हो, at least for 6 months. After stopping of the data, recording of the data, 2 दिन फ्लोट फ्री पानी में रहा, बाद में रेस्क्यू पार्टी जाके उठा के लेके आ गई। अब उसको हमने ऑफिस में रख दिया। 3 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 1 महीने बाद इन्वेस्टिगेटर ने कहा इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ है, वेयर इज द फाइनल रिकॉर्डिंग मीडियम, तो हमने उसको हाथ में दिया 4 महीने बाद। अब वो कंप्यूटर में कनेक्ट करेगा अपने, और सिस्टम बोले कि डेटा नॉट रीडेबल, USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। कम से कम 6 महीने तक रीडेबल होना चाहिए, राइट? This is also IMO requirement. The same thing, data retention by fixed type should be for 2 years. That is also a requirement. ओके लॉन्ग टर्म के बारे में कुछ नहीं कहता है कि कितने देर के लिए रीडेबल होना चाहिए, तो नॉर्मल हार्ड डिस्क है, ले जाओ साथ में, because this long term is not subjected to harsh conditions. Other two, float free and fixed type, are designed to withstand harsh conditions, but जो long term है वो normal delicate hard disk है जिसको आपको बैग में लेके जाना है। It is basically easily accessible जब people are leaving the ship, abandoning the ship, time permitting, ये FRM को निकाल के और साथ में लेके चले जाना होता है। Master takes it along with the other documents and things like that.
You must have gone through the duty roster of the abandoned ship. सभी लोगों ने देखा है? Yes, sir. उसमें किसी की ड्यूटी लगी रहती है टेक VDR डेटा? Yes, sir. Yes, No, sir. sir. Second Correct. officer. सेकंड ऑफिसर. दैट मीन्स वो कौन सा लेके जाएगा? वो मंकी आइलैंड पे जो फिक्स टाइप है वो नहीं लेके जाएगा. मंकी आइलैंड पे फ्लोट फ्री लगी उसकी बात नहीं हो रही. किसकी बात हो रही है? विच डेटा टू बी टेकन? Long term. FRM. Yes, long term FRM. That's the data. So these are all IMO requirements, only what we are studying. Next. Read quickly. So normally the color will be bright orange, bright yellow, which is visible from long distance. Actually, it is not black in color. Next. This is the fixed type. ये metallic housing में होता है. It is not plastic and definitely not buoyant enough. But this has got special features of black box. इसको आग में डाल दो, fire में, it is fireproof. In 1100 degrees centigrade of temperature, if it is lying there for 1 hour also, the data will be intact. If it is put under water for 6000 meters, 6 किलोमीटर नीचे पानी में डाल दिया तो भी प्रेशर से खराब नहीं होगा. अगर 20 मीटर्स ऊपर से इसको गिरा दिया तो भी कुछ नहीं होगा. और it is designed to withstand all those kind of things. अभी आगे भी देखेंगे थोड़ा. Sir, it is necessary to have both fixed type and float free. ये क्या लिख रहा है? What you are seeing on a screen now? बोलो, चुप क्यों हो गए? Okay, sir. Okay. मैंने बताया कि there are 3 copies of the same data recorded and saved in 3 different places. अगर ये जरूरत नहीं थी तो हम ऐसे तो नहीं लिखते और लिखते कि फ्लोट फ्री और फिक्स टाइप और लॉन्ग टर्म ऐसा होना चाहिए था. Basically, okay, answering your question direct, yes, these 3 types of FRMs are required. तीनों के तीनों होने चाहिए जहाज में. फिक्स्ड भी होना चाहिए, फ्लोट फ्री भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए. बट दिस इज एज पर न्यू रिक्वायरमेंट जो 2014 से एप्लीकेबल है. उसके पहले ये नहीं था. आपके डाउट सही है. 2014 के पहले कोई भी एक हो तो चलता था, फ्लोट फ्री हो या फिक्स टाइप हो तो चलेगा. लेकिन बाद में नई अमेंडमेंट आई रिक्वायरमेंट की, बोला नहीं, एक नहीं 3 होने चाहिए आपके पास. ऑल द 3 टाइप्स शुड बी देयर. पुराने रिक्वायरमेंट में था कि 12 घंटे की रिकॉर्डिंग हो कम से कम लास्ट 12 आवर्स की. वो भी चेंज हो गई, उसको 48 आवर्स कर दिया. So we will see a difference between the old requirement, new requirement also. But here, let us continue with this. Remember, जो भी आप देख रहे हैं, these are required features. These are required features as per IMO. Next, this is answer to a question which is sometimes asked from the VDR. What are the properties of the final recording medium? So you need to explain what is final recording medium and then write all this.
features of the recording medium: highly visible color, temperature, pressure, etc. Are we good? Yes. Next, long term. Is it okay? Next, the remote alarm module. Remember in the last class of Banwas we were talking about every equipment on board, electronic equipment especially, should have an alarm for malfunction. अगर कुछ गड़बड़ होती है तो there has to be alarm. VDR में भी ये होता है, which is what we are saying, remote alarm module. Next, replay station. Next, the software comes from the manufacturer so that I can install it on any computer and play the data recorded in the final recording medium. Next, reserve source of power. Remember that this 2 hours of recording is only responsible for the microphone. If the power failure is there, maybe other equipments are shutting down. तो ऐसा नहीं कि VDR को प्रोवाइड करना हो भाई तुम भी चलो और आपके डेटा में रिकॉर्ड भी करता चलो. No, VDR is responsible. This 2 hours of reserve source of power is used meant for only the microphones. और कुछ अगर चल रहा है तो बहुत अच्छे. Other equipments are running, then it will collect and keep recording that data. सर स्लाइड नहीं आई नेक्स्ट. कौन सी? What are you seeing? सर रिप्ले स्टेशन नंबर 23 है. Okay, ऐसा क्यों? अब अभी आ गई सर 4.6 रिजर्व सोर्स ऑफ पावर. yes. So this is what I was discussing about. Just read through. Minimum requirement is 2 hours. ज्यादा है तो बहुत अच्छे, no problem. Next, data recorded by VDR.
We already have an indication, all navigational parameters. So highlighted in red are the data which is recorded. This data will be either in text format or audio format or visual format, which is image file. All things are saved with timestamp, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन बिना टाइम स्टैम्प के वैलिड नहीं होता. मैंने लिख दिया पोजीशन इतनी, अरे कब की पोजीशन, ये अभी की, कल की, परसों की, एक महीना पहले की, पिछले साल की. तो पोजीशन है तो उसका डेट टाइम होना चाहिए, स्पीड है तो उसका डेट टाइम होना चाहिए, हेडिंग है तो किस टाइम पे हेडिंग चाहिए उसका डेट टाइम होना चाहिए. एवरी डेटा इज saved with date and time. So position coming from GPS, or if there is other kind of position fixing system, like yesterday you were talking about eLORAN and all that, अगर है तो उससे रिकॉर्ड करना है, नहीं तो GPS. Speed through water, speed over ground, resolution वगैरह छोड़ दो, but every 1 second it is recorded. Heading also is recorded every 1 second. हर सेकंड की जायरो और जो भी कंपास हम यूज कर रहे हैं नेविगेशन के लिए, मैग्नेटिक और जायरो, that is also recorded. Slide number 26, echo sounder depth. You will learn about all these devices later on, but we will be dealing with all this, echo sounder, autopilot, all these things we'll be talking about. जो अभी पीछे देखा, speed through water, etc. all that we will be doing. Echo sounder is for measuring the depth, UKC, or depth of the water also in certain cases. That is also recorded. Then the autopilot settings. We will be talking about this in detail, but just to know the autopilot, whether it is going to operate in optimum condition or not, for that certain adjustments must be provided by the user. For example, autopilot में अभी मैं hand steering में चल रहा हूँ, तो VDR will record that it is in hand steering. If I put it in auto mode, VDR will record that it was switched to auto mode at so and so time. But apart from that, all this particular control, there are other controls also which is adjusted in the autopilot, like rudder limit, rudder control, counter rudder, permanent rudder, yaw control, speed control, ऑफ कोर्स अलार्म. ये सब सारे पैरामीटर्स जो हैं सेट किए जाते हैं बाय द यूजर. सो ऑल दो सेटिंग्स विल बी रिकॉर्डेड कि ऑटो पायलट किस मोड में चल रहा था, क्या क्या सेटिंग्स थी. देन ऑफ कोर्स द ब्रिज ऑडियो माइक्रोफोन्स वी टॉक्ड अबाउट. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट देयर शुड बी मिनिमम 4 channels for recording this data. 2 for inside the bridge, 1 for outside the bridge, that is bridge wings, and 1 separate channel for VHF. सर एक बार लास्ट स्लाइड ओपन कर लो. Last to last. Slide Yes. number 25. यस सर, फाइन. Okay. ठीक है सर, आगे चलते हैं. We also talked about this. 26. Okay. यस सर. Then 27. VHF communication. This is an audio. Of course, VHF में तो ऑडियो बजता है. तो जहाज में नॉर्मली 2 VHF होते हैं, दोनों रिकॉर्ड होने चाहिए. दोनों की लेबलिंग भी होना चाहिए कि ये पहले VHF1 या VHF2 में से रिकॉर्डिंग हो रही है. आइडेंटिफाई भी होना चाहिए कि this sound is coming from VHF1, this sound is coming from VHF2.
तो VHF ID के साथ ऑडियो रिकॉर्ड होता है फ्रॉम द VHF radio, so to say. Then there is wind speed and direction. It is coming from anemometer. Anemometer is the device which gives the direction of the wind and also the speed of the wind. वो एरोप्लेन जैसा आपने देखा होगा ना ऊपर में, ब्रिज के ऊपर में लगता है पंखा घूमता रहता है उसका हवा में. Have you seen? Yes, sir. Yes, So that sir. is the wind sensor basically direction के लिए, और उसको जितना तेज पंखा घूम रहा है उतना तेज हवा चल रही है basically. So that is also recorded. Apart from that, radar ARPA image. Basically, radar is a separate device. ARPA is a separate device. But most often we have these two combined together. Whatever is seen on the screen, iska screenshot is captured every 15 seconds. Everything on the screen will be captured. जो भी है, आपने जो डेटा डिस्प्ले कर रखी है, VRM, EBL, रेंज रिंग्स etc. जो भी है, जो सारे टारगेट्स दिख रहे हैं, जिसको ट्रैक कर रहे हैं, जो अनट्रैक्ड है, जो टारगेट्स ट्रैक किए जाते हैं उनके ऊपर सिंबल आ जाती है, जो नहीं किया उसके ऊपर नहीं होती. All that will be recorded. So investigator might just take a look and find out why you are not tracking this particular target. 3 टारगेट दिख रहे हैं, 2 को आप ट्रैक कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे? Maybe that is the reason something has happened. So radar ARPA image every 15 seconds. Then hull opening status. Certain kind of vessels have a system of opening the hull. Not that directly somebody reaches the bridge, the main deck. For example, car carriers, they will have a ramp. The hull will open, the cars will drive in, then the hull will be closed. The ramp will be lifted up and it will be closed. Or tanker vessels, where I did not sail, so I don't know. But I was given to understand that pilot door is also available in the tankers on the side of the ship. Hull pe khulta hai. Anyone sailed in container and can confirm this? Yes, sir. Container ship also have pilot door, sir, but with the bigger vessels. Yes. So pilot doors are there. That is also hull opening. So whether the door has been closed properly or not, or what condition it is, there is a sensor provided. The VDR will record when it is open or when it is closed properly. It is similar to the car doors. अगर ठीक से बंद हो गया तो ठीक है, नहीं तो लाइट जलती रहती है, बॉडी लाइट जलती रहती है. आजकल नए वाले कार में ऑडियो एंड विजुअल सिग्नल्स आर आल्सो देयर. अलार्म बजने लगता है विथ इंडिकेशन कि लेफ्ट वाली rear door is open. So that is hull opening status. Then acceleration and hull stresses. This is more applicable in case of bad weather. The ship will be subjected to bad weather, तो बहुत rolling pitching होगी. She will be riding the crest of the waves, sometimes going under. Ship may be experiencing lot of, stress, loaded condition में, खास कर. There are sensors. किसी का माइक्रोफोन है. Somebody's microphone is on. Yes, okay. So there are sensors provided
electronic sensors which senses how much of stress the ship is experiencing. These electronic inputs are given to the VDR recording. Of course, time is always there. Then if the ship is fitted with thrusters, could be bow thruster, could be stern thruster, uska command and response. When you are giving the command from here to turn the thruster will take time to pick up the RPM. I suppose you know what is a rudder thruster. I mean thrusters. Correct? Yes, sir. Okay. So order and response, when you give the order and when you got the right RPM, desired RPM. Same is case with the rudder. You are giving the steering here, starboard 20. The rudder comes slowly to rudder 20, starboard. So कब आपने कमांड दिया और कितने देर में पहुंची रडर अपने गिवन रिक्वायर्ड डिग्रीज पे. Order and response. That is also recorded. Then there are fire doors and watertight doors. Watertight doors are on the main deck. Port deck पे भी होता है. So उनका क्या condition है? उसमें भी similar to the hull opening status sensors, there will be sensors provided for fire doors as well as the watertight doors. आपने ठीक से बंद किया था लेकिन शायद बंद हुई नहीं, तो इनिशियली इट विल शो द डोर वाज क्लोज्ड, बट धीरे 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 करके ढीली होकर के किसी तरीके से, मान लीजिए फॉर एग्जांपल द डोर ओपन्स, वीडीआर विल रिकॉर्ड इतने बजे दरवाजा खुल गया. देन engine order and response. There is telegraph in the bridge. We give dead slow ahead, half ahead, etc. or stern. When we give the order from the bridge, this command goes to the engine room. Engine room personnel, they take a look at this and then they give you the required RPM, either forward or stern, ahead or stern, whatever is required. So कब आपने request करी, आपने slow ahead दिया, कब आपको slow ahead की response मिली, उतना RPM pickup हो गया, because there is a time delay between the order and getting the right RPM. If there is some technical difficulty, हो सकता है कि आपने तो command दे दिया slow ahead, लेकिन RPM नहीं मिलती, अगर technical problem हुई. So when the engine picks up that RPM, that response is also recorded. Also, when the order was given, that is also recorded. Then additionally, all mandatory alarms. Of course, we have the microphone in the bridge. Any kind of sound coming in the bridge will be recorded through the microphones itself. In Banwas, we had understood and we had seen all kinds of important mandatory alarms are sounding in the bridge. चाहे वो freezer alarm हो या hospital alarm हो या fire alarm हो, Banwas हो, any kind of alarm is sounding in the bridge. So the VDR should record all mandatory alarms at this. उसके लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक फीड दी जाती है VDR को.
Then is the rolling motion. You must have seen rolling के लिए inclinometer होता है. There is a board like this जिसमें 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री ऐसा लिखा होता है. And there is a pendulum. When the ship is rolling pitching, it goes to this side, goes to this side. Basically जहाज के साथ ये जो मीटर है वो हिलता है, ग्रेविटी से ये सीधा रहता है. So the pendulum is always pointing forward, I mean pointing down. But with the ship, this may go to one side, this may go to one side. What we have just shown on the screen is the manual type of inclinometer. But there could be electronic also, where the recording of rolling is picked up electronically by the VDR. अगर इलेक्ट्रॉनिक inclinometer है तो उसका भी डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं. How much the ship was rolling. Then ECDIS के screenshot again recorded every 15 seconds with timestamp. What was the situation visible on the screen of the ECDIS? तो screenshot भी सेव होती चलती है, but the ECDIS also keeps on record of the complete voyage in the log format, database के format में. At so and so time, so much speed, so course, so everything. इसकी एक copy is saved by the VDR also. So ECDIS image के साथ साथ जो electronic log का data है, that is also recorded by the VDR. Finally, the configuration data जिसको आप छोड़ दे सकते हैं. It is technical information about the connectivity between two sensors. Technical information about the communication between two devices. कल आप NMEA की बात कर रहे थे पिछले क्लास में. तो NMEA के कौन सा फॉर्मेट, बहुत तरह की चीजें होती हैं, उसका टेक्निकल डिटेल्स होता है हर सेंसर के बारे में कि which sensor is providing the data in which format etc. उसको configuration data के नाम से हम बुला रहे हैं. So these are the data recorded by VDR. Any questions? So how many of data did you count? Sir, कितने हो गए? in ECDIS, sir, there is also a replay mode in which the full data is recorded of the voyage in this videographic format. So this is also saved by the VDR. Negative. वो ECDIS का फीचर है, उसकी रिक्वायरमेंट है that in audio visual display of the recorded voice, recorded data will be there, but it is not of the complete voice. ECDIS की रिक्वायरमेंट है लास्ट 12 घंटे की इमेज वाली फॉर्म में डेटा रिप्ले हो सकता है, उसके पहले की डेटा लॉग के फॉर्म में होगी, टेक्स्ट के फॉर्म में होगी. अगर आई एम नॉट डिनाइंग कि आप जो बोल रहे हो वो गलत ही है, अगर पूरे वॉइस की डेटा आप रिप्ले कर पा रहे हैं तो दैट इज एडिशनल फीचर गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर. बट IMO की रिक्वायरमेंट है कि पिछले 12 घंटे का ग्राफिक डिस्प्ले होना चाहिए वॉइस का. यू गेटिंग माय पॉइंट? Okay, sir. Okay, sir. Yes. Requirement is last 12 hours. बट मैन्युफैक्चरर में प्रोवाइड कि आप 1 साल का डेटा रिप्ले कर दो भाई. मिनिमम की रिक्वायरमेंट हम डालते हैं, IMO कहता है कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा से करो जो करना है. हमने बात करी रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा फॉर 48 hours, that is minimum. If you are able to record 96 hours, record, nobody is stopping you, but you cannot make it 47.
सो एक्डिस इमेज स्क्रीनशॉट तो एक है, उसके साथ लॉग की डेटा होती है. VDR is already keeping the screenshot of ECDIS for last 48 hours. Is that right or not? Yes. And long term is recording the data screenshot of last 30 days. Correct? Yes, sir. Correct, sir. All right. So these are the data recorded by VDR. हम लोग VDR किए जा रहे हैं. But most likely you have heard the term SVDR in the ship. Yes, sir. You had VDR on the ship or SVDR on the ship? Sir, SVDR. SVDR. One vote. Others? और कोई? Anyone else reply? आपके जहाज में क्या लगा था? Sir, VDR. SVDR, sir. SVDR. तो ये SVDR चीज क्या है? हम यहाँ VDR बोले जा रहे हैं तब से. ये SVDR चीज क्या होती? Sir, simplified VDR. All right, very good. Simplified VDR. तो क्या सिंपल बनाएंगे उसमें? Sir, same features same नहीं होते हैं, उसमें से कम amount of data वो capture करता है rather than VDR. बाकी उसका purpose और principle same होता है. Very good. Well done. Well done. Exactly the same. I've got nothing to add to that. VDR and SVDR are same things. Why we are calling it SVDR or simplified VDR is because it is recording less amount of data. But it is, so to say, required for older installations or older ships, not installation, older ships. अब पुराने जहाज में ये हल सेंसर, स्ट्रेस सेंसर, तो फायर डोर सेंसर, वाटर टाइट डोर्स, हल ओपनिंग्स, इंक्लाइनोमीटर, ये सब इतनी सारी चीजें तो नहीं होंगी. पुराना शिप उतना ऑटोमेशन नहीं था, तो पुराने शिप्स के लिए कहा गया कि आप कम से कम इतना तो रिकॉर्ड कर लो. तो it records less amount of data. What data? All electronic data which is available in the bridge. What would it mean? In the bridge we have GPS, electronic device. तो डेट टाइम पोजीशन तो रिकॉर्ड करना बनता है. सो GPS lat long. GPS से ही हमारा कोर्स ओवर ग्राउंड, स्पीड ओवर ग्राउंड मिल जाता है. That is also recorded. ब्रिज ऑडियो वो तो VDR के साथ ही लगी थी. जब आई थी तो माइक्रोफोन इंस्टॉल किया था, तो ब्रिज ऑडियो भी रिकॉर्ड होनी चाहिए. VHF कम्युनिकेशंस, VHF भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसका तो ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. देन रेडार और आरपा, तो कम से कम एक रडार का डेटा रिकॉर्ड कर लो, और नहीं तो कम से कम AIS का कर लो. तो रेडार और AIS डेटा. So these are mandatory requirements for SVDR. Date time, position, course over ground, speed over ground, bridge audio, VHF audio, radar और AIS डेटा. इसके अलावा अगर कुछ और अवेलेबल है, then you may also record it, but these 7 data is mandatory. तो अगर किसी जहाज में SVDR लगना है,
तो हो सकता है कि उसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स वगैरह थोड़े कम हो, क्योंकि कम डेटा हैंडल करना है, इतने सारे पोर्ट्स की जरूरत नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, थोड़ा चीप हो, बट अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। उसमें भी SVDR में भी वही सारे मॉड्यूल्स होंगे। देयर विल बी डेटा मैनेजमेंट यूनिट, तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, नॉट सो मेनी पोर्ट्स, नॉट so many data handling at the same time. वही ऑडियो मॉड्यूल, माइक्रोफोन्स, वही फाइनल रिकॉर्डिंग मीडियम, वही अलार्म मॉड्यूल, रिप्ले स्टेशन रिक्वायरमेंट्स as well as battery backup or power reserve source of power. So an SVDR may be recording this. Why? Because on the older ships, so much of data was not available. Then next question comes, which are the ships which we will consider old ships? These ships will be built before 2002. The ships built before 2002, I mean 1st of July 2002, may be considered as old ships और उनके लिए SVDR को ही मैंडेटरी किया गया। SVDR can be installed on ships, cargo ships, only cargo ships, remember, not passenger vessels. Only cargo ships of 3000 GRT and above, cargo ships of 3000 GRT and above, constructed before 1st of July 2002. This is the requirement for SVDR, carriage requirement. तो VDR कहाँ के लिए है? Naturally, newer ships which may have all this information. So VDR will be installed on, okay, पहला लाइन पहले पढ़ लेते हैं. VDR is mandatory for all passenger vessels and ro-ro passenger vessels, irrespective of size and date built. उनको कोई exemption नहीं है. अगर आप passenger ship हैं, तो you must have VDR installed. बनवास में भी देखा था हमने. Passenger ships were not exempted. Other is cargo vessels and tankers, of course, of 3000 GRT and above, constructed on or after 1st of July 2014. Sorry, 2002. So VDR carries a requirement for newer ships and all passenger vessels. SVDR for older cargo vessels and tankers. Older means built before 1st of July 2002. So are we good with the carriage requirement of VDR and SVDR? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So VDR में like what is the new installation, old installation? अभी हमने कहीं पे बात किया था, पुराने रिक्वायरमेंट में 12 घंटे की रिक्वायरमेंट थी, बाद में 48 कर दिया. पहले रिक्वायरमेंट थी कि फ्लोट फ्री हो या फिक्स टाइप हो, अब रिक्वायर कर दिया कि नहीं, 3 होने चाहिए आपके पास. फ्लोट फ्री भी होना चाहिए, फिक्स्ड भी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए. तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं ओल्ड इंस्टॉलेशन एंड न्यू इंस्टॉलेशन के बीच में. विल बी टेकिंग अ लुक एट those things also next class. Sir, Any questions? sir, when will we getting these notes and these slides which you are showing, because we need to make our own notes? Yes,
Anjana ma'am, are you listening to me? Are you there, ma'am? I haven't received, Prakhar, the email IDs. Once I receive the email ID, immediately I will send it. So it will take maybe about 1 day, 2 days more when the email is circulated to me. Okay? Okay, thank you, sir. Right. Any other question? Varun Patni? वरुण पटनी छोड़ के भाग गए क्या क्लास? कहाँ हो? अरे नहीं है सर, क्लास। इधर ही है सर, आपकी बात सुन रहे हैं सर। अरे वाह, ठीक है। Any questions? नो Or सर, we are ऑल गुड। नहीं ठीक है सर, थैंक यू चलो, सर। चलो, bye bye, have a great day, signing off then.